We will be starting the session at 6:45 students. Okay. In the meantime, Jenny, tumko students, please let me know is my audio is audible or not, and also my presentation is visible or not. Okay. Hello, Parth. Good evening. Good evening. I'm not that great. How are you? How are you, Parth? And YouTube live students, good evening. Okay, Parth, that's good. Okay, so good evening, Abhay. So bear with me for today, okay? Health issues, throat infection, yeah, cold, वगैरह. Yeah, sure, Parth. Thank you. So yeah, in the meantime, Harish, good evening. So please let me know is my audio, is my presentation visible or not using technical check. Okay, please let me know, students. Please let me know. Okay, thank you, Abhay. And yeah, bear with me for today. Okay, so I won't be on my video today.
So please bear with me with the classes. I hope you will be able to understand everything that I'm going to talk about today. Okay. Yes. Okay. Okay, Pa, thank you. So yeah. So everyone has answered. Haha, yes, yes. Yes, Abhay. I saw it. Hello, good evening, sweetie. So please answer the poll, okay, technical poll, so that there is no issue. Okay, okay, keeping the poll for 10 more minutes, 10 more seconds, sorry. Good evening, Harish. Okay, so everyone has answered. So I'm ending the poll and I'm thinking that, okay, everything is well and good. Okay. If that is the case, students, then we'll go ahead with the session. So in the last class, what did we talk about? Do you remember all the things that we have talked about in the last class? Yeah. So yeah, my name is Samanvit and welcome to today's session. I'm your physics faculty from Avantifellows. Okay. So initially we'll talk about what? We'll talk about quick recall, what you have studied in the last class. Then we'll talk about common forces in mechanics. Okay. What we are we'll be talking about a common force, that is spring force. So we'll be talking about it. Yes, Path. Yes, yes. I did accept it. Yeah. I got to know that. Yeah. I hope you can see it. Yes. Okay. So then later on, we'll talk about numericals. Okay. We'll be talking about numericals, which are very important for your JEE and NEET. Okay. And also, students, there are certain numericals based on second law. Okay. Based on second law. And we'll be completing this in the later period. Okay. We'll be doing it in later period of time, later classes. Okay. Let's say there is something called apparent weight. So we'll be talking about these things and all. Okay. Is it good? Yeah. Then we'll talk about these things in the later classes. Okay. In the last class, students, what did we talk about? Do you remember? We talked about what? Newton's third law of motion is, where we saw that it states that what? Every action, there is always an equal and opposite reaction. We saw that, yes. And we came to know that what? There are certain yeah, certain points regarding Aishi, good evening. Yeah, there are certain points or notes that needs to be considered when you're talking about the third law. क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी थर्ड लॉ होता है, ऐसा नहीं कि आपने चाटा मारा और उसके लिए आप एक और रिएक्शन के लिए चाटा मारते हो. That is not what equal and opposite reaction. So do you remember what are the points that were discussed in order to consider that, okay, it is I mean it's an action and it's a reaction force. Do you remember all those points? Yes or no, students? Let me know in the chat. Yeah, Bagalkot students, welcome to today's session. Yeah. So today we are talking about, right now I'm talking about last class. Okay. And bear with me for today. Okay. Okay. Good. Yes. So what were the things that need to be noted down? One is what both action and reaction occurs at the same time. Yes. Very good. Abhay, sweetie, very nice. So what does it mean? Let's say you have a mass. Then if you're keeping on a surface, then you know that there will be a weight that is acting downwards, vertically downwards. Then you know that there is a normal force that will be acting like on the mass by the surface. Similarly, there is a normal force that is acted by the mass on the surface. And these two normal reactions are occurring at the same time. Yes, they're occurring at the same time. Yeah, that is one thing. Second thing is both action, reaction act on different bodies. Yes or no? See, if I'm taking this as my action force, okay, then this will be the reaction. Yes, how? See, what does the second point means? Over here, this normal force NSM is basically normal force, what applied by what? What surface to the mass. Basically, normal reaction applied by the surface to the mass. And NMS is the normal reaction or normal force, normal reaction. Okay. What? It by the mass, applied by the mass to the surface. Over here, both the forces are applied for different surface. One is for
surface, one is for the what? To the mass. Yes. So both the action and reaction act on different bodies. Yes. Now the third thing was force always exists in pairs. So what does it mean? See over here, this NSM and NMS are what? The pair forces. Yes or no? Always all. See if there is a normal reaction by the surface on the mass, then there will be a what? Another reaction by the mass to the surface. Okay. There will be always the. There will be what? A pair of reaction that will be acting. Pair. So always the forces will be what? In pair. Now, the fourth thing we discussed what? Action reaction pairs are of same nature. Yes. See over here, you know that if this is the earth surface, if this is the earth surface, then this is what? This weight that is acting. This is the gravitational force. This is the gravitational force. And you know that normal reaction is the what? Contact force. Is the contact force. Then you can't see, in order to have a what? Action reaction pair, they should be of same nature. Over here, this is a gravitation force, this is a contact force. So these two can't be a pair. Yes, these two can't be a pair. Only the pair that can happen is between what? NMS and what? NSL. So normal reaction is a what? Action reaction pair. Action reaction pair. Yesterday we talked about another action reaction pair. Do you remember? Which is it? Do you remember? Manthan, good evening. Do you remember another action reaction pair? Let me know, Sweetie, Abhay, Jain Vitumkur students, Bagalkot students. Yeah. That is good. Yeah, but as I said, see, if you're taking the mass M, yeah, then we know that there will be a tension that will be acting over here. So tension is an what? Is an what? Action reaction pair है ना? Action reaction pair है ना? ये याद है आपको? क्योंकि ये दो हो रहा है वो different bodies के लिए हो रहा है, ये जो tension है कि नहीं? Yes, very good. So tension is, always remember, tension is a what? Action reaction force. Reaction force. And you know how to like draw the direction and all, right? How to draw the direction of force. How to draw AR. What is AR? Manthan? How to draw the direction of tension. ये सब आपको पता है? Okay? हम इसके बारे में बहुत बातें कर लिए, ठीक है ना? So there will be certain problems today. हाँ, okay. Good. Manthan, very nice. Now, then we saw that the application of third law. We saw that there is what? Recoiling of gun. आपने देखा कि अगर बुलेट आगे जा रहा है, when we are pulling the trigger, then there will be a recoil velocity. Yes or no? Recoiling of the gun. Yeah. Abhay, very good. While running, we press the ground in backward direction with foot. Yes, that also we saw that. Then also we saw that when a man jumps out from a boat, the boat moves backward. Yes, very good. We saw that. And also a rubber ball rebounds when what? Struck from the hard floor. So these are the what? These are based on third law of motion. Yes, Newton's third law of motion. Yeah, very good. Very nice. Okay, others. Okay, that is good. Now, then we talked about what? Conservation of what? Linear momentum. This is one of the important concept, and you should always remember this, students. This is one of the important concept. See, conservation of linear momentum says that the total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved. Yes, where we saw that if there is a system of particles and it is an isolated system है कि नहीं? अगर एक body था, let's say there was what? A system, and it was what? Yes, very good. If it is isolated system, then what? The total momentum is what? Conserved. Where we saw that this total momentum of a particle, what? Then we saw that the initial momentum of the system is equal to the final momentum of the system. Where what we got? The law of conservation of momentum. क्या मिला था हमें? Do you remember?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे मिला था, याद है आपको? Let me know in the chat what was the law of conservation of momentum says. Let me know quickly. Yes, sweetie, very good. Others. See, it says that what? The total momentum before collision is equal to what? Total momentum after collision, yes or no? Where we saw that there is what assumption over here. That assumption is, what is assumption, students? The assumption was what it is? Yes, very good. There is no external force. There is no external force. Very good, very nice. Okay, yeah. So Bagalkot students, please bear with me for today, okay? Since my health is not that great, so I'm not able to deliver it properly. But yeah, in the coming classes, you'll be seeing much more interactions, okay? And others too. And we saw that that is what, let's say if m1 and m2 are two bodies of masses, okay, and it has a velocity u1 and u2 initial velocities, then we have final velocity of m1 and m2, okay bhai, thank you, v1 and v2. Then we get what? M1 u1 plus m2 u2 equal to what? M2 v sorry, m1 v1 plus m2 v2, yes or no? This was the law of conservation of momentum basically says, and this is very important, students. This is very important. Yes, very good. Yeah, and also we saw where this conservation momentum applies using a numerical. पता है ना, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिकॉल ऑफ गन में देखा है ना, रिकॉलिंग ऑफ गन में, कि हमने देखा कि हाँ, जो भी मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड हो जाता है रिकॉलिंग ऑफ गन में. वैसे बहुत है, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है, रॉकेट propulsion में भी conservation of momentum holds, okay, over there. Is it good, students? Let me know in the chat quickly. So I'm giving, let's say, 30 seconds of time to grasp everything, okay? Just make sure that you remember all those things here. Harish, very good, very good. That's the right answer. Yeah. So Tirth, good evening. Now, coming into today's session, what we are going to study today. Today, we'll be talking about common forces in mechanics, okay? Common forces in mechanics. In that, the first thing we are talking about today is spring forces. किसने spring देखा ये बताओ? अरे it's okay Tirth, no problem, okay? No problem. So let me know how many of you have seen spring. Spring ऐसे बना सकते हो ना, या ऐसे भी बना सकते हो? आपने spring देखा है? अच्छा, yes, very good. अगर spring देखा है तो spring का क्या कुछ ये very good मंथन, प्रॉपर्टी क्या है पता है आपको? थोड़ा जब आप spring को देखते हो तो क्या याद आता है? अगर मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे पैर में स्प्रिंग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इधर मतलब इसको कंप्रेस करके मैं जंप कर सकता हूँ. कैन आई जंप? है कि नहीं? हाँ, कंप्रेस करके जंप कर सकता हूँ ना. वेरी गुड, एक्सपांड. हाँ, और जब जंप करूंगा, जब मैं एयर में रहूंगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ये स्प्रिंग एक्सपांड होगा ना. यस, स्प्रिंग विल एक्सपांड. अबे वन वी, ओके,
Yes. Okay. Yes, yes, very good, very good. Manthan, very good. Okay. So what is happening over here? You can what? See, whenever you know that whenever you're trying to pull the, let's say if you're trying to pull the string, pull, what is happening? It is going to what? Expand. And similarly, when you're trying to what? Compress the, when you're trying to like push from here, push, it will what? Compress. But मुझे ये बताओ, अगर ये करने के बाद जो कंप्रेस और जो एक्सपांशन करने के बाद इफ आई स्टॉप अप्लाइंग फोर्स क्या हो जाएगा? अगर मैंने फोर्स से अप्लाई करना स्टॉप किया तो वो क्या हो जाएगा? ये बताओ पहले मत. सो व्हाट विल हैपन टू द स्प्रिंग? लेट्स से अगर मैंने फोर्स खींचा है उसको और वो एक्सपांड हो गया, उसके बाद मैंने फोर्स लगाना स्टॉप कर दिया तो क्या हो जाएगा? या यस, व्हाट it will regain its, it will come to its what its position is, its initial position जो भी था उस पे आ जाएगा. So based on this we'll be talking about certain things. Okay, what are the important things that comes into picture? The first thing is, yeah, see over here there is a picture of the spring. Over here this is the spring. Okay, sorry, this is the spring. Okay, this is the spring. Yes. Okay, what? A spring is a metallic wire. Yes or no? Let's say if this is the what my notation. Yes, as I told you, when the two free ends of the spring, मान लो ये A और ये end B है, two ends, what free ends of the spring is pulled away or pushed away each other, the length of the spring is changed. अगर मान लो ये मेरा लेंथ था L0, ठीक है, अब मैंने इसको खींचा, ठीक है, मतलब एक्सपांड किया, ठीक है, अगर मैंने इसको एक्सपांड किया बाय x तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? अभी लेट मी नो. if I pull by a length by, let's say by x meter increases by क्या फैक्टर? L0 plus x हो जाएगा ना? yes or no? Similarly if I'm trying to compress it, अगर मैंने इसको compress किया, ये जो लेंथ आएगा ये L0 minus x हो जाएगा ना? जो भी लेंथ होगा, L0 is the original length. This is the original length. Yes, very good, very nice. So whenever you're trying to what is happening over here, whenever you're trying to provide a force, yes, now it is the length is getting what? Expanded. And when you're trying to push force, now what is happening? The spring is getting what? Compressed. But if I try to remove that forces, what will happen? एक, अगर मैंने बोला कि अगर मैंने इस फोर्स को हटा दिया तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने इस फोर्स को हटा दिया तो क्या हो जाएगा? कि आपको पता है कि क्या हो रहा है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, आएगा ना, रिस्टोरिंग फोर्स. when I don't apply any force, don't apply force, yes or no? आफ्टर, अगर मैंने एक बार खींचा उसके बाद उसको छोड़ दिया तो एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा ना? yes or no? लेट मी नो. देखो, अगर मैंने यहाँ एक लेंथ था L0, फिर मैंने इसको खींचा, फिर वो हो जाएगा क्या? L0 प्लस एक्स, क्या? फोर्स लगा के, ठीक है. अगर मैंने इस फोर्स को हटा दिया तो वो फिर से यहाँ आ जाएगा, ऐसा L0. लेकिन कैसा आएगा? वो एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा ना. सो दैट रिस्टोरिंग फोर्स, okay, that restoring force is called what? That restoring force is called, do you remember students? पता है आपको क्या होता है वो? That is called what? Spring what? Let me know students. आप उसको क्या बोलते हो? स्प्रिंग फोर्स बता सकते हो ना? एक स्प्रिंग फोर्स होगा, ऐसा नो. दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज डिनोटेड बाय FSP. ठीक है, मैं उसको FSP से डिनोट करूंगा. FSP इज दी व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स. यस मंथन, वेरी गुड. ओके, रिस्टोरिंग फोर्स, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ ओवर हियर क्या होगा? हो गया कि देयर वाज दिस वन फेमस साइंटिस्ट, ठीक है, एक फेमस था. उन्होंने क्या किया कि जो ये वाला रिस्टोरिंग फोर्स है ना,
रिस्टोरिंग फोर्स है ना, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया, वो मतलब दैट साइंटिस्ट व्हाट हिज नेम वाज हुक, okay, he basically he gave a Hooke's law, and based on that Hooke's law, in future you are going to study this, don't worry, future, but you remember, okay, in future you're going to study this, but according to Hooke's law, we know that what is it students, we get FSP is equal to minus K into X, ये था, ठीक है, is it good? Let me know students. बेसिकली ये क्या बोल रहे पता है, जो भी अगर आप स्प्रिंग को if you're trying to pull or if you're trying to push, then there will be a what restoring force, and this restoring force is basically what, basically उन्होंने ऐसा दिया कि restoring force is proportional to the displacement. What is proportional to displacement? उन्होंने ऐसा बोल दिया. फिर जब आप proportionality constant को हटाते हो ना, then you get a constant. This K is basically this constant, this is a constant, and this is basically what, do you remember what is it? This is spring constant. ये spring constant है, ठीक है ना, ये याद रखो. और यहाँ ना जो माइनस साइन आ रहा है ना, ये basically is telling that it's opposite to the force applied. Basically यही बोल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना. So from everything over here, the expansion, like the experiment done by Hooke's, we get that the force, the restoring force is basically proportional to the displacement, where X is what, displacement. बस ये याद रखना है और आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है. We'll be going to deeper, don't worry, जब हमारा next आएगा, so we'll be talking about spring forces and all, okay. So this is minus K into X. ठीक है ना? Is it good? Students, let me know in the chat. Harish, very good. Thank you. Others, let me know. Okay, Abhay, very good. Now, when you're talking about what, if that is the case, can I know what is the unit of SI unit of spring force? SI unit of spring force. पक्का? सर SI unit of spring constant है, spring force नहीं. Spring constant क्या होगा? हाँ, spring constant, that is K. K का SI unit क्या है? Newton meter. Very good. कैसा है? आपको पता है ये force है. Minus K into what, X, okay, X, you know that X is displacement, X, okay, yes, very good. Newton meter मंथन मीटर स्क्वायर कैसे हो जाएगा? देखो आपको चाहिए कि F by X, you know that what, F is the force, that is Newton, and X is what, displacement, that is meter. X square कहाँ आ रहा है? X square तो नहीं आ रहा है ना. Manthan, it is F is equal to Kx, okay? Yes, Parth, very good. So the SI unit is what? Newton meter, है ना? Newton per meter होगा ना? Newton per meter. It's okay, Manthan, no problem at all, okay? Don't worry. अरे it's okay, students, don't ask sorry, okay? If you have done a mistake, it's okay, no problem at all. देखो, गलती करने से आप सीखते हो ना, तो it's okay to make mistake. Yeah, yes, Harish, very good. We'll be talking about those things later on, okay? So always remember this, okay? Now students, there is what, as I said, the spring has a tendency to come back to its original length or develops an opposite to change in its length. मैंने अभी बताया वो क्या बोलते हैं उसको, FSP बोलते हैं ना. The opposing force is the restoring force, and I called it to be what, FSP. यहाँ तक सही है, सब कुछ सही है. And we got to know that FSP is equal to what, minus K into X. सही है? Very good, very nice. हाँ, very nice. Now, there are certain things that you need to remember, okay? Now, the first thing is how to find out, अगर क्वेश्चन में दिया, ठीक है, क्वेश्चन है, उसमें आपको
मतलब मान लो कि एक स्प्रिंग दिया है, ठीक है, एक स्प्रिंग दिया है और एक मास दिया है, ठीक है। नाउ इन दिस, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग और लेट्स से स्प्रिंग फोर्स, दिस इज व्हाट, और रिस्टोरिंग फोर्स, जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है ना, वो कैसे लगा सकते हो? देखो, आप ये चीज यू कैन रिलेट दिस विद व्हाट, विद टेंशन। आप मुझे ये बताओ, जब एक स्प्रिंग था, ठीक है, लेट्स से नॉट, एक स्ट्रिंग था, इफ दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज द मास, इसका टेंशन कहाँ आ रहा था? यहां से टी आ रहा था और यहां से टी आ रहा था, ऐसा और नो? ऐसा नो स्टूडेंट्स? अब यहां देखो, अगर मान लो ये मास m है, एक वेट हो रहा है एम जी, ऐसा नो? नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू पुल दिस मास, अगर मैंने इस मास को पुल किया, तो मुझे ये बताओ, पुल करने के बाद एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा ना? ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना, वो इस साइड होगा ना, ऑपोजिट साइड, ऐसा और नो? और आपको पता है, देखो, अगर ऐसा है स्प्रिंग, तो आपको पता है कि अगर मैंने यहां से पुल करने के लिए कोशिश की, एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा एफ एस पी। सिमिलरली यू नो दैट देयर विल बी अ व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स फ्रॉम दिस साइड। बस आपको अगर एक साइड में आपने रिस्टोरिंग फोर्स लगा दिया ना, दूसरे साइड उसका उल्टा लगा दो, बस। यस, सो दिस इज हाउ यू डू इट, ओके। आप देखो, अगर ये भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, जस्ट कंपेयर इट विद व्हाट, कंपेयर इट विद टेंशन, बस। टेंशन में कैसे लगाते हो आप? सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही लगाना है, बस, काम खत्म। अगर आपको पता है कि फाइंड आउट करना है कि हाँ, अगर एफबीडी लगाना है, अगर इसका एफबीडी बनाना है, तो कैसा होगा? देखो, पहली बात तो एक मास एम है, एक वेट है ना, एम जी, एंड यू नो दैट देर इज अ एफ एस पी, बस काम खत्म। यस, वेरी गुड। पार्थ, सी, द नॉर्मल फोर्स, रिमेंबर, नॉर्मल फोर्स जो आता है वो कांटेक्ट फोर्स है, इट्स अ कांटेक्ट फोर्स। बिना कांटेक्ट के नॉर्मल फोर्स आता नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, यस। टेंशन की जगह, देखो, पहली बात तो ये स्ट्रिंग था, वो स्प्रिंग में बदल गया, फिर जो टेंशन था वो एफएसपी पे लगा दिया, ठीक है। वो टेंशन है, वो एक रिस्टोरिंग फोर्स मतलब बन गया, ठीक है। इज इट गुड? ओके, यस, बस इतना ही करना है आपको। लेट मी नो स्टूडेंट्स, तुमकुर, बागलकोट स्टूडेंट्स, स्वीटी, तीर्थ, लेट मी नो इन द चैट, हरीश, लेट मी नो इन द चैट, अमृता, आयुषी, लेट मी नो इन द चैट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, ओके, गुड गुड, ओके, नाइस। नाउ what, see, always remember that there is one, remember, please note it down along with me. Remember, what is that? Remember, please note it down. I'll write it down. What? The spring force will be, okay, just a second, will be in opposite direction direction of what? Of the displacement, of the displacement. Is it good? देखो, ये क्या बोल रहा है पता है ना? जो आपका एक्स में बोल रहा था, जो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा था ना, वो बेसिकली क्या था? देखो, आपके पास एक मास था, ठीक है, आपने उसको यहाँ रखा स्प्रिंग के ऊपर। नाउ देयर इज वन स्प्रिंग ऑफ वन मास, ओके। अभी आपके हाथ इस यहाँ है, ठीक है, मान लो यहाँ आपका हाथ है, आपने इस हाथ को यहाँ से रखा। नाउ दिस इज योर इनिशियल पोजिशन आई। आफ्टर आफ्टर रिमूविंग माई हैंड, क्या हो जाएगा ये बताओ पहले? अगर मैंने यहां से हाथ हटा दिया तो क्या हो जाएगा, ये बताओ मुझे। देखो, ये स्लोली नीचे नहीं आ जाएगा, स्लोली विल कम डाउन, यस और नो? या? नाउ दिस, अगर मान लो ये स्ट्रिंग था, अगर मैंने हटा दिया, तो थोड़ी देर के बाद जो ये मास था ये यहाँ आ जाएगा ना,
slowly. Yes or no students, let me know in the chat. ऐसे पहले यहाँ था, है कि नहीं, फिर यहाँ आ जाएगा, ये जो था ये था x, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये होने का, ये रुकेगा ना व्हेन इट विल स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपने हाथ था आपका, दिस इज योर हैंड, पहले आपने हाथ रखा, फिर आपने उसको हटा दिया, फिर स्लोली वो नीचे आ जाएगा, है ना, स्लोली नीचे आ जाएगा, आने के बाद एक पॉइंट पे वो रुकेगा, दैट इज एट इक्विलिब्रियम। नाउ व्हेन यू चेक द डिस्प्लेसमेंट, नाउ यू शुड चेक द डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी x, दैट इज हाउ वी गेट f इज इक्वल टू माइनस k इनटू x, ठीक है ना। ये था हुक्स लॉ बेसिकली। इज इट गुड स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट। या यस यस, वेरी गुड, अदर्स लेट मी नो, लेट मी नो। पता चला ना अभी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है, देखो ये जो डिस्प्ले, देखो मैंने अब अगर यहाँ हटा दिया तो आपको पता है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा है, वो FSP है, दैट इज FSP, and you know that there will be a what FSP over here also. Now that is why we get that restoring force to be FSP is equal to minus K into X. Okay, good, good. Yes, Aishi, very good. Others, let me know in the chat. Okay. Now if that is the case students, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पता चला कि देखो यहाँ क्या हो रहा था कि आपका जो वेट हो रहा है वो नीचे हो रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से, ठीक है, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हो गया x। नाउ व्हाट विल हैपन इफ लेट्स से आई हैव अ स्ट्रिंग, ठीक है, आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने क्या किया कि जो मान लो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है, ठीक है। नाउ आई ट्राई टू पुल दिस विथ x1, ठीक है, अगर मैंने x1 मीटर पुल किया, ठीक है, एक साइड पुल बाय दिस x1 डिस्टेंस एंड इसको जो पुल किया वो x2 डिस्टेंस पे, पुल बाय x2 डिस्टेंस। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे ये बताओ व्हाट विल बी दी स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स वो क्या आ जाएगा, ये बताओ मुझे। थिंक स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी दी व्हाट रिस्टोरिंग फोर्स दैट विल बी गेट, बताओ। देखो ये याद रखना, मैं हिंट दे रहा हूं ना पार्थ, ना ना ना, दैट इज नॉट द केस। सी पहले आप क्या कर रहे थे कि जब आप पहली बार कर रहे थे ना, सो यू आर पुलिंग विद सेम मीटर, ठीक है, x मीटर ही आप पुल कर रहे थे, ठीक है, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा था FSP, ठीक है, उसकी वजह से आपका आ गया FSP इज इक्वल टू माइनस K इंटू एक्स, ठीक है, x था डिस्प्लेसमेंट आपका। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि एक साइड आप x1 मीटर पुल कर रहे हो, एक साइड में x2 मीटर पुल कर रहे हो, तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ जाएगा फिर। यस स्वीटी, ओके, very good, na, okay, so I guess you have missed a sign over there, check your sign once. Very good, Parth. Just let me know, it is plus sweetie, very good, okay. See over here, always remember students, this string, the string, sorry, not the string nahi hai na, wo spring hai na, the spring is taken to be what, massless, is taken to be massless and what, or frictionless, ठीक है। देखो जो अभी आप क्या कर रहे हो कि जो पुल कर रहे हो ना वो एक अलग अलग डिस्टेंस में पुल कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका लेंथ आ जाएगा ना पूरा, वो बेसिकली ऐसा आ जाएगा ना कि जो लेंथ था ये था L0 था, ठीक है, फिर आपने x1 और x2 मीटर से पुल किया, तो आपका जो पूरा लेंथ आ जाएगा ना वो तो आ जाएगा ऐसा ना L0 प्लस x1 प्लस x2। यस सब है, लेट मी नो।
the final length. Yes. Now basically change in length कितना है? Change in length or displacement basically कितना है? Delta x कितना है? That is what x1 plus x2 है कि नहीं? ये आपका change in length है. So then therefore this what restoring force is basically what? The spring force. Okay, the spring force is basically what? Minus k into delta x. Yes, where delta x is equal to what? x1 plus x2. पता चला ना concept अभी? Yes, very good. Yeah, over here always remember what? Minus sign is what? The spring force is in opposite direction. Yes, minus sign indicates what? Spring force is in opposite direction. बस ठीक है ना? जो भी spring force होता है ना, how? Yes, very good, very good. Now if that is the case students, then here is a numerical. Okay, now please answer this numerical students. See over here I have a spring. Okay, I have a spring. Now मेरे पास एक स्प्रिंग था, ठीक है. अब मैंने क्या किया कि मैंने इस स्प्रिंग को एक फोर्स लगाया, ठीक है, एक्सपेंशन फोर्स, और मैंने x मीटर यहाँ x इक्वल टू 2 मीटर से इसको खींचा और इस साइड x इज इक्वल टू 2 मीटर से खींचा, ठीक है. और आपको पता है कि k इज इक्वल टू 100 नानो आई मीन न्यूटन मीटर. ओके, इट इज 100 न्यूटन मीटर. देन फाइंड द स्प्रिंग फोर्स. मुझे ये बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या है? आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जल्दी, ये बहुत इजी है, अभी हमने बात किया था. प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. Abhay, Parth, Sweetie, very good. Abhay, your unit is wrong. Abhay, what will be the unit? Abhay, let me know. Yes, very good students. Those who have answered it, very good, very good. Yes, Manthan, no, check your answer. Check your answer, Manthan. अभी हमने देखा, देखो, अभी हमने देखा कि अगर एक स्ट्रिंग है एंड इफ इट इज व्हाट x1 और x2 मीटर से हम इसको खींच रहे हैं, then we get FSP to be what? Minus k into delta x, where delta x is what? The total displacement. Yes or no? And here we know that it is what? 2 plus 2. ये x2 था 2 और x1 था 2, so that is what? 4. Yes or no? 4 मीटर से हमने इसको खींचा. फिर आपको चाहिए FSP. FSP is what? Minus k. k दिया 100 न्यूटन मीटर into what? Into delta x 4 meter. Meter cancels. Then FSP is what? Minus 100 Newton. Yes or no? Yes. Okay, Tirth. See, everyone has given the right answer, but the unit में क्यों इतना wrong है? Manthan, very good. Tirth, unit is wrong. Abhay, unit is wrong. Sweetie, unit is wrong. Parth, unit is wrong. Tumkur students, let me know. Bagalkot students, let me know. This was your answer. है कि नहीं? Yes.
क्या बता दूं मैं तीर्थ? आई डेंट गेट यू. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर, सॉरी, माइनस 400 न्यूटन. ये जो आंसर है वो 400 है, माइनस 400 न्यूटन है. Yes, Parth, very good. Jenny Bagalkot, how it is minus 100? Bagalkot students, how it is minus 100 Newton? देखो, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ minus 100 ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇದು 4 ಉಂಟು. ಹೌದಾ? 4 into 100 is 400, right? Yeah. So please check your answers, okay? Yeah. Good. No problem. Okay. Now, see, this was very simple. This is a simple problem, okay? Just I wanted to make sure that the concept is clear. Now, there is something that I want to talk about, okay? Now, I told you that, let's say, you have a spring, okay, and it is attached to a mass, and I told you that this is the initial position, and I have my hand here, okay, my hand, this is my hand, okay. Now if I after removing my hand, after what, agar maine हाथ को हटा दिया, if I remove my hand, what will happen? Let me know. आपको पता है कि अगर मैंने हाथ हटा दिया तो ये बेसिकली नीचे आ जाएगा ना, स्लोली, ये स्लोली नीचे आ जाएगा, and the mass would what come to equilibrium position. Yes. Yes or no? Now you know that initially यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, तो जो डिस्टेंस उसको उसने कवर किया था वो तो डेल्टा एक्स, ऐसा नो, और एक्स प्लस से डेल्टा एक्स, ठीक है. अब आपको पता है यहाँ एक वेट एक्ट कर रहा है, ऐसा नो, एक वेट एक्ट कर रहा है, that is m into g, that is why it is coming down, yes or no? Yes. Okay, very good. देखो वेट की वजह से बेसिकली नीचे आ रहा है ना, yes or no students? Now if and you know that अगर ये नीचे आ रहा है ना, एक एक स्प्रिंग फोर्स भी होगा ना, yes or no? एक रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा ना, that is we called FSP, yes or no? Now if I'm doing the free body diagram, एक फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूं, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा कुछ होगा क्या? एक मास है, इसके लिए एक वेट है m into g, और एक क्या FSP होगा ना. इज इट गुड? ये सही है जो मैं लिख रहा हूँ? yes or no students, let me know. अगर ऐसा लिख रहा हूं तो कैन आई राइट, देखो आपको पता है ये नीचे हो रहा है ना, yes or no? So can I write FSP is equal to m into g, फ्री बॉडी डायग्राम की वजह से, yes or no? Now we know FSP is what, minus k what into delta x. So can I substitute it one में substitute किया तो minus k into delta x is equal to m into g, yes or no? And we get what, delta x is equal to m into g by k, और ये माइनस साइन आ गया ना, हमें क्या आ गया, डेल्टा x is equal to minus mg by k. This is one of the important formulas that you need to remember. Basically ये क्या बोल रहा पता है? This is basically distance, I'll write it properly, distance after which the mass will attain equilibrium. सही है ना? देखो मैंने हाथ हटा दिया, ठीक है, I removed my hand, after which this mass came into halting position, that is came into halt position. halt position मतलब क्या है कि equilibrium में आ गया ना, yes or no students? So delta x is equal to minus mg by k is basically the distance covered. Delta x is what distance है ना, एक distance है what covered after which the mass will attain what attain equilibrium. सही है? Yes or no? Let me know students in the chat. let me know. Yes, very good. Others, so I hope you are able to understand. Harish, let me know. पक्का ना? पक्का समझ में आ रहा है कि या फिर ऐसे ही मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है? ओके
पक्का? ओके, बागलकोट स्टूडेंट्स, तुमको स्टूडेंट्स लेट मी नो. ओके, अगर ये सब समझ में आया ना, देन आई वांट यू टू एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल. अरे ओके, थैंक यू अबे. बट आई थॉट सिंस माय हेल्थ इज नॉट गुड, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत स्लो बात कर रहा हूँ ना आज. ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, ओके अबे, थैंक यू. सी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है पता है? आपके पास एक, ठीक है, एक स्प्रिंग है. ये स्प्रिंग बेसिकली अटैच्ड है एक पुली से, ठीक है, पुली से. और पुली के साथ एक मास अटैच्ड है, ठीक है, दैट इज 3 kg मास. और एक और मास है 5 kg मास, ठीक है, 5 kg. क्या हो रहा है? एक स्प्रिंग है, एक पुली है, और दोनों मास है. एंड इट इज गिवन दैट k इज इक्वल टू 100 Newton per मीटर और g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये सब दिया है. Then if that is the case students, you need to find okay, a tension, okay, second one b acceleration, ठीक है, c आपको change in length of the string. ये तीनों आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. चलो, आई एम गिविंग यू 3 minutes of time to solve this. Try to solve this, okay? Then I'll explain how to solve this, okay? So it is a 3 minute of time, students. Please try to solve it. Come on. Yes. Everyone, Bagalkot students, Tumkur students, you need to try solving this. Manthan, Parth, Sweetie, Teerth, everyone, okay? So please try to solve this. 3 kg, 5 kg mass with the pulley, with the string, K and G is given, okay? Okay, Parth, good. So in the meantime, students, please answer the NPS poll, okay? Please answer the NPS poll. Everyone has to answer the NPS poll, students. And along with that, what? Answer the question also. Harish, please solve this, okay? Harish. पार्थन है भाई, चेक योर आंसर फॉर एक्सेलरेशन. आपने कुछ तो गड़बड़ किया है. Manthan, very good, very good. That's the right answer. What is the value for acceleration? Manthan? अबे नहीं, आपने ना कुछ तो गलती किया है. जो एक्सेलरेशन वैल्यू है ना, उसमें ही गलती है. मंथन, वेरी गुड. नहीं पार्थ. ओके, गुड गुड. अबे पार्थ नहीं, आपका जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना, वो कुछ गलत आ रहा है वैल्यू. एक बार चेक कर लो आप.
Okay, last 2 seconds, 1 second. Na Parth, na. Okay. Harish, did you get the answer? Okay. Now let us try to solve this. Okay. देखो, जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो पहले चीज का ये बताओ कि आपको यहाँ कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. या इट्स हाँ, देखो पहली बात तो आपको पता है कि यहाँ एक वेट एक्ट कर रहा है नीचे, दैट इज 5g, and there is a weight acting, that is 3g. Yes or no? And there's a tension acting T, and there's a tension acting over here T. There's a tension that is acting over here, and there's a tension that is acting over here T. Yes or no? If that is the case, then students, let me know. अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको देखूं, मुझे ये बताओ कि FBD ऑफ 5 kg करूंगा ना, 5 kg का FBD करूंगा तो एक नीचे 5 ग्राम है, ठीक है, ऊपर एक टेंशन है, ठीक है. आपको पता है जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है ना, एक्सेलरेशन है, सर नो. तो कैन आई राइट व्हाट 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5a. ये वाला आ गया पहला वाला इक्वेशन. यस और नो? आपको पता है कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है, अगर देयर इज इफ देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स देन देयर इज एक्सेलरेशन. यस और नो? यस. Similarly, if I'm doing FBD for 3 kg mass, 3 kg mass, ठीक है, अगर मैंने उसको भी FBD बनाया तो 3 ग्राम, एंड ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर टेंशन है. ऐसा नो. सो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इस साइड है. ऐसा नो, एक्सेलरेशन यहाँ है और एक्सेलरेशन इस साइड है. सो कैन आई राइट क्या T minus 3g is equal to 3 into A, that is second. Yes or no? Sir, not 5. Oh, sorry, not gram. Okay. By mistake. G is what acceleration? 5g. My bad. Thank you. Thanks a lot, Abhay. Okay. That is what? That is 5g basically. Okay. That is acceleration due to gravity. Now, if I'm trying to add what addition of 1 plus 2, what will happen? So you know that 5g minus t is equal to 5 into A, and t minus 3g is equal to 3 into A. Now TT cancel out. Yes. Now 5 minus 3 is 2. G is equal to 5A plus 3A. It is what? 8A. Now you want acceleration, which is equal to 2G by 8. And you know that G is 10. So A is equal to 2 into 10 divided by 8. Yes. And A comes out to be what? 2.5 meter per second. Yeah, aapka. Yes. Now the second thing you need is what? Tension. यूनिट टेंशन कैसा आएगा? आपको पता है कि 5g minus t is equal to 5a. You want tension is equal to what? 5g minus 5a. Now you know that 5g is 50 minus 5 into a, 5 into 2.5, which is equal to 50 minus 12.5, and which is equal to 37.5 Newton. Yes, tension. ये आ गया आपका टेंशन, ये आएगा आपका एक्सेलरेशन. यस और नो? Yes. Now talking about another thing. Now you want change in what? Length of spring. देखो, आपको पता है कि आपको जो स्प्रिंग था वो ऐसा था, है कि नहीं? एक पुली पे अटैच्ड है. इस पुली पे एक टेंशन एक्ट कर रहा है नीचे, और यहाँ एक टेंशन एक्ट कर रहा है नीचे. आपको पता है कि वो जो स्प्रिंग फोर्स है बेसिकली वो इस तरफ है, FSP है. Yes or no? Yes or no, students? Let me know in the chat. जल्दी बताओ. Yes. Now you know that if that is the case, students, can I write FSP equal to T plus T, which is equal to FSP is equal to what? 2T. ऐसे लिख सकता हूँ मैं? Yes. And you know that FSP is equal to what? Minus K into delta X.
You want what? Delta x, yes or no? And FSP is what? 2t. So 2t is equal to minus k into delta x. So delta x is equal to what? 2t divided by minus k. So delta x is equal to what? Minus 2 into 37.5 divided by what? 100. K 100 tha. So basically you get delta x to be what? Minus 75 divided by 100, which is equal to what? What student? 0.75 meter. And this is your answer. Ab samajh mein aaya? Let me know, students. Let me know quickly, please. Did you get it? Let me know, students. Pakka na? Pakka samajh mein aaya? Yes, very good. Ha. Acha, okay. Harish, okay, good. If that is the case, students, that's all for today. But I'll give a homework question for you guys. Okay, I'll give a homework question for you guys. Just a second. Now, the question says, this is the homework question. The question says, see, there is a spring, okay? And आपको एक mass attached है यहाँ जो 1 kg है, ठीक है? और एक और string है, उस पे एक mass attached है, वो है 2 kg, ठीक है? And the what k spring constant value for both the string to be 100 Newton per meter and k to be 100 Newton per meter, ठीक है? And g is equal to 10 meter per second square दिया है, ठीक है? हाँ, but it's okay, no problem. Now you need to find extension in both strings, in both springs, okay? Both springs क्या? At equilibrium, ठीक है? At equilibrium, ठीक है? ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. बेसिकली डेल्टा x1 और डेल्टा x2 फाइंड आउट करना है. ये बोथ के लिए यहाँ एक एक्सटेंशन होगा, यहाँ पर एक एक्सटेंशन होगा. ओके, सो मान लो ये डेल्टा x1 है और ये डेल्टा x2 है, ठीक है? So that's all for today, students. Thank you for attending, and if you have any doubt, you can stay after the class. YouTube live students, please do the homework. Okay, take it then. Bye bye. See ya.